Hello, hello, CBSE enthusiasts. I bring to you the chapter The Rat Trap by Selma Lagerlöf. So, a Swedish writer, the setting is a small town of Sweden. We have a major character, the rat trap seller. Now, this guy, when the chapter begins, he is a kind of a cynic. He is skeptical, cynic, matlab, he questions everything. He's kind of a pessimistic also because he's so poor, वो इतना गरीब है he questions things. Now he's also a rat trap seller. वो इतना गरीब है, कभी कभी ही indulges into petty theft, small छोटे मोटे छोटी मोटी चोरी, or he begs, or the odd times that he gets certain things after begging, he makes rat traps out of those. These small industries that they have, he begs from there, and he gets those materials, the wires and the other material, out of which he makes a rat trap. Now, although he's a rat trap seller, he's very philosophical. He thinks that the world is a rat trap. अब आप जैसे ये देख रहे हैं, you know how the a rat would be tempted by all these food items and get inside the trap, and the trap would shut upon the rat and it would entrap him. Similarly, people are tempted by materialistic goods. ये जो रास्ता है, it's kind of a temptation. Once you enter inside, the door shuts upon you. ऐसे उसके philosophical thoughts हैं. So it's although he's a rat trap seller, he's very clear with his very philosophical in his view. तो वो कहता है कि ये world भी एक rat trap की तरह है. If you're tempted by richness and rich and materialistic things, the world will shut down upon you. All right. So going ahead, now this guy, a rat trap seller, आप देखो, this is what he does. Just a small representation of what he does. So he begs for all these raw materials, and then he makes a rat trap out of it, which he sells in the market. जब ये नहीं होता है, he indulges into theft, he indulges into begging. तो ये कहता है, the world with all its lands and seas, its cities and village is nothing but a big rat trap. And it is a pastime, often in his ploddings, in his slow walks, because ये सारा सामान है, भूखा है बेचारा, जान नहीं है उसके शरीर में. So while in his slow plodding, slow movements, he ऐसे thoughts उसके दिमाग में आते हैं. Now एक बार, unlike हर बार की तरह, बाकी most of the times he shooed away, like how he looks, he shooed away when he asked for refuge, shelter from people. पर एक बार की बात है, he knocked at the door of this crofter. Now ये जो crofter है, he was himself a lonely man. तो सरप्राइजिंगली ये क्रॉफ्टर ने ना ही उसको अपने घर के अंदर बुलाया, बट ही ऑल्सो गेव हिम porridge to eat. He also put gave him supper, good food. He put fire for him, and they played cards in the night. Now he told that he had a cow. ये cow was so efficient. Earlier he used to work at the mills, but ये गाय इतनी efficient है, because of that cow he earns like good amount of money, which keeps him all going. So उसको ऐसा लगता है स्टोरी शेयर करने के बाद कि probably this guy does not believe me. So he shows the 30 kroner, और ऐसे supposingly assuming कि वो यहाँ से 30 kroners वो दिखाता है, and then puts it back at the same place. यहाँ से दिखाता है, puts it back at the same place. Now ऐसा वैसे तो कोई करेगा नहीं, बट ही फॉर सम गुड रीजन ही डज दैट. नाउ द नेक्स्ट मॉर्निंग दे लीव फॉर वर्क, बट the rat trap seller, he smashes the window, he takes the money and he goes. अब आयरनी ये बात है कि पहले ये रैट ट्रैप सेलर को ऐसा लगता है कि वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप द मोमेंट आप टेम्प्ट हुए नहीं कि द रैट ट्रैप शट्स ऑन यू. हाउएवर ही हिमसेल्फ गेट्स टेम्प्टेड. अब वो बचने के लिए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मेन रोड, ही टेक्स द फॉरेस्ट. अब वो फॉरेस्ट में दिन भर घूमता रहा, और उसके वो थॉट्स अभी भी आ रहे हैं कि द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, एंड ही इफ ही गेव इन टू इट, ही माइट गेट कॉट. हाउएवर ये करने के बाद ही थिंक्स कि अब द वर्ल्ड हैज शट अपॉन हिम, and he lies on the ground when he hears the thumping of the the thudding of the iron ores. So he understands that there's a mill close by. तो वो जाता है एक आयरन मिल में, और वहां पे दो लोग काम कर रहे हैं. नाउ ऐसे लोग प्रोबेबली रात को शेल्टर के टाइम, ठंड का मौसम है, क्रिसमस का टाइम है, स्वीडन है, रात है, फॉरेस्ट है, ठंड लग रही है, सो ही गोज फॉर अ शेल्टर. अब हो सकता है कि इस टाइप के लोग पहले भी आते हो, तो ये दो लोग उसमें काम कर रहे थे, दे आर्ट सरप्राइज्ड एट ऑल, एंड दे अलाउ हिम टू स्लीप फॉर द नाइट. नाउ ये जो मेयर था, ऑन दैट नाइट
he comes for an inspection. He's a very hardworking man, comes for an inspection, and he sees the rat trap seller. He sees the rat trap seller in one part of in one corner. Now, not assuming that the rat trap seller might have looked like this, he is in one part of the corner, and he thinks that ye jo insan hai, probably he's some kind of a friend named Nils Olof, that he that had worked with him in a regiment, एक मिलिट्री रेजिमेंट में उसके साथ था, इज व्हाट ही थिंक्स, दैट प्रोबेबली ये वो इंसान है. नाउ व्हेन ही मिस्टेक्स हिम फॉर दैट, एक तो रैट ट्रैप सेलर ने पहले ही चोरी कर रखी है, सो ही शुड नॉट गो अहेड, बट ही गोज अहेड सेइंग, playing along के हाँ, he plays along saying that he is Nils Olof and life has not been kind to him. तो अब ये जो मेयर है, he invites him home कि चलो क्रिसमस का टाइम है, यू बी विद अस. नाउ दिस मैन नोज कि अगर वो वहां जाएगा, ही माइट there might be chances of him being in a trouble. So he says that he rejects it. However, in some time, the mayor's daughter comes to ask him to come along to the house. अब वो उसको मना नहीं कर पाता है, and that's how he goes to their house. रात को, ऑल्दो एडला विलमैन सन, जो मेयर की बेटी थी, शी नोज दैट दिस मैन लुक्स काइंड ऑफ स्केची, और कुछ तो इसने गड़बड़ की है. हाउएवर, बिकॉज her father had brought him home, so she understands and she agrees to play along. नेक्स्ट डे when this man shaves and cleans himself up, इन दोनों को रियलाइज होता है कि नहीं, ये वो इंसान तो नहीं है, दिस इज नॉट दैट गाय दैट दे थॉट ही was. तो द मेयर गेट्स वेरी एंग्री saying that you should have accepted that this was your fault. He said, मैंने तो पहले ही बोला था मुझे घर नहीं जाना है. So but the daughter calms him down saying that because we have promised him Christmas cheer, let's have him invited. नाउ जब ये लोग सर्विस के लिए जाते हैं, इनको पता चलता है कि एक इंसान ने क्रॉफ्टर के कुछ 30 kroner चुराए हैं, एंड द डिस्क्रिप्शन मैचेस एग्जैक्टली दिस गाय. नाउ दे कम बैक होम एंटिसिपेटिंग कि अब तक, बिकॉज वो घर पे अकेला है और दिन भर वो सोता ही रहा एंड ही क्लियर्स अप एंड ही वेयर्स अ नाइस सूट, तब इनको समझ में आ जाता है कि वो इंसान नहीं है, वो इज नॉट द ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड दैट दे थॉट ही वाज. सो सोता ही रहा, बट देन ये लोग ये सोच के आते हैं कि घर से अब a lot of things might have been stolen. However, to their surprise, this man had left a rat trap, and this was the Christmas time when Edla Wilmanson, she's happy having him around. जब वो घर आते हैं तो देखते हैं कि एक rat trap है, उसके अंदर 30 kroners है, और उसके अंदर it is addressed by this man saying that the rat trap is a Christmas present from a rat who would have been, now a rat is a human, he's metaphorically meaning him, a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain. मतलब बिकॉज एडला विलमैनसन ने उसको इतने अच्छे से ट्रीट किया दैट ही हिज सोल ट्रांसफॉर्म्स एंड ही वांट्स टू बी अ गुड मैन. सो इन दैट द रैट ट्रैप ही kept 30 kroners, he kept a letter, and he disappears. So that's about the story. Now, quickly, the peddler ki character traits kya hai? Poor, homeless, cynical. He sells rat traps. He is kind of greedy, you can say, for money, of course, because he's poverty stricken. तो उसको ऐसा लगता है कि थोड़े पैसे भी, and although he is quite philosophical, how he compares a world to a rat trap, so you can say that his redemption क्या होता है? गलती करने के बाद जो वापस अपने गलती को एक्सेप्ट करके वो सही सही रास्ते में चले, is called redemption. To rectify your error is redemption. So his redemption is triggered by Edla's kindness. Edla Wilmanson, the Iron Man's daughter, kind and compassionate. Unlike her father, she sees Peddler's vulnerability, उसके वीकनेस को वो देखती है, एंड ट्रीट्स हिम विद रेस्पेक्ट. इट इज हर एक्ट ऑफ जेनरोसिटी जो कि मेक्स हिम a good man. The Iron Master, well, the practical man, and then he's kind, considering that he understood him to be a friend and he wants to help, so a helping friend. And however, when he comes to know that he's not, then he wants to disown him, which would be a practical decision, of course. Crofter कौन था जिसने उसको refuge दिया था, shelter दिया था? He's a lonely old man, welcomes peddler, trusts the peddler, and shares his earnings only to be betrayed later. Literary devices क्या क्या है? Metaphor, comparison of two things, without, as in like. World is a rat trap. Irony, जो होना होता है उसके opposite होता है. अब ये इस टाइप के philosophical thoughts है इसके. He considers that the world is a rat trap, however he himself gets caught in it. Symbolism,
when words when the thing stands for ideas. तो rat trap symbolizes materialism and greed. वो रैट ट्रैप क्या है? मटेरियलिज्म एंड ग्रीड, डिसेप्टिव वर्ल्ड. सो फोर शैडोइंग, जब आपको एक हिंट मिले कि कुछ बुरा होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल द क्रॉफ्टर्स ओपननेस अबाउट हिज सीक्रेट्स इज फोर शैडोइंग. उसको पता है कि यू नो हाउ he welcomes a man all lonely and all desolate. However, he still goes ahead and he still wants to give him shelter. इमेजरी क्या होता है? जब वर्ड्स पेंट पिक्चर इन आवर हेड, द डिस्क्रिप्शन ऑफ आयरन मिल, क्रिसमस चीयर, ये सब सिंबॉलिक है. वो फॉरेस्ट का डिस्क्रिप्शन, आयरन मिल का डिस्क्रिप्शन इमेजरी है. एलिगरी क्या है? जब हमको किसी स्टोरी को पढ़ के एक मॉरल लेसन मिलता है. मॉरल लेसन इसमें क्या है कि अच्छाई कैन चेंज अ बुरी थिंग इनटू अ गुड थिंग. सो आपकी अच्छाई एक बुरी चीज को भी अच्छा बना सकती है, इज व्हाट एन एलिगरी इज, अ मैसेज दैट यू गेट आउट ऑफ रीडिंग अ चैप्टर. Alliteration, repetition of sound, fallen into a line of thought. The l sound is repeated. Hyperbole, exaggeration, बढ़ा चढ़ा के बोलना. So the world is described as a trap that will close on you. The impenetrable forest है एक जगह. ये सब exaggeration है. Contrast, दो चीजों के बीच में juxtaposition, I mean दो चीजों के बीच में sharp difference, stark difference बताना. तो आयरन मैन का इनिशियल काइंडनेस कॉन्ट्रास्ट विद हिज लेटर रिजेक्शन ऑफ द पेडलर. द सेटिंग कहाँ है? स्वीडिश कंट्री साइड है. Backdrop is Sweden. Crofter's cottage, small humble home where the crofter offers warmth and hospitality. Dense forest represents entrapment and despair. Ramsey Iron Works, a place of industry, hardship, and mistaken identity. The manor house is a symbol of warmth, redemption, and transformation. That would be about it. Thank you so much. Keep studying, keep following. Thank you so much.